ठीक है जी, ये अब रिकॉर्ड हो रहा है आज का सेशन। नाउ दिस इज लेक्चर ऑन आईएसएलएम। ठीक है। आईएसएलएम एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर के हम अंडरस्टैंड करते हैं um, कि इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का सारा जो कॉन्सेप्ट है उसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए और इंटरेस्ट रेट को उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए फ्रेमवर्क बनाए। अच्छा, इसके नोट्स भी मैं दूंगी, ठीक। लेकिन उससे पहले हम ये कुछ बैकग्राउंड वीडियोस हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है। और इन वीडियोस को देख के मैं इसके बीच में रोक के आपको समझाऊंगी भी। सो डोंट वरी। इसके अलावा आपके पास इस टॉपिक के ऊपर नोट्स भी होंगे। ये बैकग्राउंड वीडियोस इसलिए हैं ताकि अम, जो आपको आईएसएलएम का जब मैं फ्रेमवर्क बताऊं तो वो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इसको रोक के मैं आपको समझाऊंगी। लेट अस लुक एट दी बैकग्राउंड वीडियोस फर्स्ट। इनके लिंक्स भी मैंने नोट्स के अंदर शेयर किए हुए होंगे। ठीक है। ठीक है, ये खान एकेडमी के वीडियोस हैं और वहाँ तो आपको पता है। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस नाउ और इसके बीच में रोक के और मैं इसको एक्सप्लेन। Every now and then, the GDP. What I want to introduce you to in this video is the idea of a Keynesian cross. And this is one of the tools of analysis of Keynesian thinking, which is really the idea that maybe every now and then the GDP, when it's at equilibrium, isn't at an optimal state. It's operating well below potential. And the way that we might be able to get, if you are a follower of Keynesian thinking, the way that we can get it closer to potential, closer to full employment, is by somehow affecting aggregate demand in some way. अच्छा, केन्जियन, कुछ लोग इसको कीन्जियन भी पढ़ते हैं लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन है केन्जियन। हाँ, केन्जियन क्रॉस, केन्स। ये केन्स जो है वो एक इकोनॉमिस्ट था जो कि 1930s में उसने लिखा अपनी प्रेजेंट की अपनी थ्योरी। ठीक है, ये वो टाइम था जब एक डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ था। ठीक है, और उस इकोनॉमिक डिप्रेशन में से निकलने के जो उस वक्त की थिंकिंग थी, जिसको क्लासिकल थिंकिंग कहते हैं, उसका कोई जरिया नहीं था। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों जो चीज याद रखनी है वो ये कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक को कहते हैं क्लासिकल और दूसरे को कहते हैं केन्जियन। हाँ, क्लासिकल वर्सेस केन्जियन, ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लासिकल जो है, अब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में समझाती हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखो, क्लासिकल सब हमने जो लास्ट चीज की थी वो की थी क्या, वी वर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई और हमने कहा कि एग्रीगेट सप्लाई लॉन्ग रन में और वेरी लॉन्ग रन में वर्टिकल होता है, यानी कि प्राइस का उसको पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस जो है वो एक नॉमिनल वेरिएबल है। एक ये थिंकिंग है, ये जो थिंकिंग है ना, ये बच्चों थिंकिंग है जिसे क्लासिकल थिंकिंग कही जाती है। एज अगेंस्ट दिस क्लासिकल थिंकिंग, केन्स जो है वो कहता था, जो मैंने आपको शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व दिखाया था, वो केन्स ने प्रपोज किया था। उसने कहा था हाँ जी, मानते हैं कि लॉन्ग रन में तो जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो वर्टिकली होगी, सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट in the short run it can be also upward rising. Why? Because of that, you see, जब आपके अनएक्सपेक्टेड किस्म के जो होती हैं, बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड रीजंस, ठीक है, आपकी जो सप्लाई कर्व है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, वो मीडियम टू शॉर्ट टर्म में अपवर्ड राइजिंग भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमने लास्ट चैप्टर में किया था। जो उसका लास्ट पार्ट था ना, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो कीन्स ने बनाया था। उससे पहले जो है, जो उसका वर्टिकल होना है, वो सब कुछ इसके दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट है क्लासिकल, जिसमें बाय द वे एडम स्मिथ भी आता है। याद करो एडम स्मिथ कौन है हमारा,
जो ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, राइट? जिसने वो कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड, याद है? इस पे आपने असाइनमेंट भी की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ? तो he is one of the economists who is considered now as a classical economist, ठीक है? So he is considered classical economist. तो वो कहता था कि minimum interference होनी चाहिए इकोनॉमी में। Keynes on the other hand said कि नहीं, मतलब some um, uh, there is some space for monetary and fiscal policy, ठीक है? और वो स्पेस क्रिएट करने के, यानी कि हुकूमत को एक मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। इसको केन्स ने जस्टिफाई करने के लिए अपनी थिंकिंग दी, और उस इस थिंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ये बहुत बड़ी चीज जो अब हम करने लगे हैं, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं मानते। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड का इम्पैक्ट कोई जो है वो कंसिडर प्रॉपरली नहीं करते। बट कीन्स जो है वो कहता है कि नहीं जी, एग्रीगेट डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो अब हम करने लगे उसको कीन्सियन क्रॉस कहते हैं। अभी आप सुन लो, ये दोबारा से सुनना, इसके नीचे इसका देखो ना, वो भी लिखा हुआ है, इसका ट्रांसक्रिप्ट भी लिखा हुआ है, तो आपको समझ आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट यही है। सो देयर इज केन्स एंड देन देयर इज क्लासिकल, ठीक है? क्लासिकल वाले तो ये जो कुछ बता रहा है ये इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो वर्टिकल होती है और एग्रीगेट डिमांड मीनिंगलेस होती है। एग्रीगेट डिमांड मैक्सिमम जो है वो डिटरमिन कर सकती है इन्फ्लेशन, जो कि अगेन दे से इट्स नॉट a variable which is a real variable, it's just a nominal variable. Prices, inflation, etc. are or nominal variables, तो इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कीन्स कहता है कि नहीं, एग्रीगेट डिमांड को भी डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो ISLM कर्व है वो सारा का सारा कीन्सियन थिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसलिए ये समझना आपके लिए ज़रूरी है और ये बैकग्राउंड वीडियोस देखना आपके लिए ज़रूरी है। And what we'll see is we're going to build up our Keynesian cross analysis based on what we understand from the consumption function. So we're going to first start thinking about planned expenditures. And we're going to think about what happens when planned expenditures deviates from actual output, from actual expenditures. So right over here, so this is very similar to what we've done before, but we're actually thinking of it in terms of planning. So let's say we have planned expenditures, expenditures planned, and we could just write the components of aggregate expenditure here. Well, you're going to have consumer spending, you're going to have investment, and I'm going to be careful here. I'm going to call it planned investment. This is exactly what firms are looking to produce. And the reason why I differentiate this here is because if for whatever reason aggregate expenditure is less than they expect, then they might build up inventories, and those inventories get counted as investment. So those would be excess inventories above and beyond planned inventories. If actual demand is higher than expected, then it might eat into inventories. And when inventories are eaten into, it actually takes away from planned investment. So there would actually be kind of you'd be eating into the total investment in that situation. So that's why I'm going to differentiate between planned investment and actual investment. And then, of course, you have government spending. And then finally, you have net exports. And for the sake of the analysis of the Keynesian cross, and once again, अच्छा, एग्रीगेट डिमांड याद करो, ठीक है? एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स याद करो। यही होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, यही होते हैं ना? वो यही है। लेकिन इंस्टेड ऑफ नेमिंग इट एज एग्रीगेट डिमांड, इस यहाँ पे इसको देखा जा रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। जो बात समझने वाली है बच्चों वो ये, मैंने आपको जब हम करा मैंने सर्कुलर फ्लो वाला डायग्राम बताया था, तो बार-बार एक ही चीज़ कही थी कि ये चीज़ देखें, एक्सपेंडिचर अप्रोच से या इनकम अप्रोच से आपको आंसर एक ही मिलेगा, राइट? केन्सियन कहता है कि नहीं, इसमें फ़र्क हो सकता है, ठीक है? सो केन्स सेज़ कि नहीं, उसमें फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये जो एक्सपेंडिचर है वो it can be planned expenditure as well. प्लैन्ड एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि किसी को भी एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इन द लॉन्ग रन व्हाट इज द आइडियल आउटपुट गोइंग टू बी, तो वो उसके अंदाजे लगा रहे होते हैं, और उसमें मिसपरसेप्शंस भी हो सकती हैं, वो स्टिकी भी हो सकते हैं। यही लॉजिक सारी दी थी ना।
तो उसमें अंदाज़ों में डिफ़रेंस भी हो सकता है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक्सपेंडिचर जो है, वो इक्वल ही हो टू द आउटपुट। तो उसमें फ़र्क हो सकता है, ठीक है? तो इसी लॉजिक के ऊपर बेस करते हुए आगे चीज़ Again, बताऊँगी। this is a super oversimplification. We're going to assume that at any given level of GDP or aggregate output, that these are all constant, that these are not really dependent on aggregate output or GDP, which is, of course, a huge oversimplification. So if we were to plot any of these versus aggregate income, we'd say that they are really a flat line. So maybe planned investment might look like something like that. Maybe government spending would look something like that. In no way is at some level that's pre-planned. It's kind of exogenous to our model. It's not dependent in any way. It's an external factor. We're assuming it's fixed. It's not dependent on aggregate income. And so government spending, it would look something like that. And net exports, maybe it looks something like that. The one of these, the factor that you can imagine, because I said we're going to build on top of the consumption function, that we're going to assume is driven by aggregate income is consumption right over here. And so the way that this thing will look, is you have, so let me draw another plot right over here. Draw another plot. We have aggregate income. That is going to be our independent variable. And then over here, we can just view this as expenditure. So if we were to plot consumer spending, we've seen that before, especially if we assume a linear consumption function. So what we studied in the last few videos, these were all linear consumption functions, and depending on how you write it, but they all look something like this. They have a positive vertical axis intercept. अब गौर से देखो, इधर जीडीपी, इधर उन्होंने एक्सपेंडिचर डाल दिया है। देखो, न जब हम जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम किया, उस वक़्त मैंने कहा एक्सपेंडिचर अप्रोच, इनकम अप्रोच, ना? एक्सपेंडिचर अप्रोच, प्रोडक्शन अप्रोच, ये दोनों आपको एक ही आंसर देंगी। कहा था ना, केन्स इससे डिफर करता है। वो कहता है कि नहीं, शॉर्ट रन के अंदर जो है वो इनमें डिफरेंस आ सकता है, और इसलिए उसने ये केन्जियन क्रॉस का डायग्राम बनाया है आपको दिखाने के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल ही हों। ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हों। And they have an upward slope that is less than 1. So consumption by itself would look something like this. This would be consumer spending as a function of aggregate income. And ये भी मैं आपको समझा दूँ, ये कंज़्यूमर स्पेंडिंग इस तरह का ग्राफ क्यों बनेगा? इस तरह का ग्राफ क्यों बनेगा? क्योंकि जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इसका एक माइक्रो इकोनॉमिक लॉजिक है। देखो, कुछ तो एक्सपेंडिचर्स करने ही करने हैं, ये वो वाले एक्सपेंडिचर्स हैं जो उसने किसी भी इंडिविजुअल ने करने ही करने हैं, चाहे उसके पास इनकम हो या ना हो। और ये जो अपवर्ड ग्राफ नज़र आ रहा है कंज़म्पशन का, ये इसलिए क्योंकि जैसे-जैसे इनकम राइज़ करती है, यूजुअली उसके साथ एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ते चले जाते हैं। then if you add all of these constants to it, then your graph for aggregate planned expenditures would look something like this. So if you added just net exports, it would get a little bit higher because these are constant. At any point, you would add this much. If you add government, a little higher than that. And if you add all of them, including planned investments, you might get something that looks, and I'll do it in this color right over here, you might get something that looks like this. So I'm just starting off with consumer spending. I'm using a linear consumption function. You don't have to, but it makes the Keynesian cross analysis a lot more cross-like and easier to analyze. And then if you add all of what we assume to be constant things, then aggregate expenditures is going to be up here. So this right over here is aggregate planned expenditures, I should say. Now, we know from the circular flow in the economy that when an economy is at equilibrium, your aggregate output is equal to your aggregate expenditures, or your aggregate expenditures is equal to your aggregate income. So really at an equilibrium, these two things are going to be equal. And we can actually plot a line that shows all the points that those are equal. That would be a line that has essentially a slope of 1, where y is always equal to expenditures. So it might look something
something like this. And this is where the name Keynesian cross comes from, because essentially you have planned expenditures, and then right over here you have the equilibrium line, or what I call the equilibrium line, because these are all points where income is equal to expenditure. Right over here, income is equal to expenditure. Income is equal to expenditure. So when you look at aggregate planned expenditures, ठीक, अच्छा। अब जो चीज़ ये जो 45 डिग्री लाइन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है वो पॉइंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रही है वो वाले सारे पॉइंट्स जहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल है, ठीक है? नाउ क्लासिकल्स वुड से कि दिस इज़ द ओनली रेलेवेंट पॉइंट। ये वाली जो लाइन है वेयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम इज़ सेम इन द व्हेन द एंटायर इकोनॉमी इज़ टेकन टुगेदर, एक्सपेंडिचर और इनकम सेम है व्हेन तो यही यही रियल चीज़ है। ये बाकी जो कुछ केन्स कह रहा है वो बकवास है। क्लासिकल्स के लिए यही लाइन इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ बिलीव करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में, ठीक है? ये जो है लेकिन हम जो लॉजिक केन्स की जो लॉजिक है उसने कहा हाँ जी, ये तो एग्ज़िस्ट करता है, मैं इसको नहीं अ, ये वाली जो लाइन है वहाँ जहाँ पे एक्सपेंडिचर और आपका इनकम इसको मैं चैलेंज नहीं करता, लेकिन उसके साथ-साथ शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है, ये सिचुएशंस भी आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि कंज़म्पशन फंक्शन इस नेचर का है और जो एक्सपेक्टेड आपकी जो है एक्सपेंडिचर्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हों जो आपके एक्सपेंडिचर्स होंगे अगर लोगों को इनकम के बारे में 100% पता होता तो हमेशा ऐसी लाइन आती। केन्स कहता था उन्हें 100% पता नहीं हो सकता, तो इसलिए वो ऐसी लाइन भी हो सकती है बेस्ड ऑन द कंजम्पशन फंक्शन। वो ये वाला है, ठीक है? कंजम्पशन फंक्शन में ये 4 पॉइंट्स इन्होंने ये दोनों ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं, कांस्टेंट्स जब ऐड होते हैं तो इस तरह लाइन ऊपर की तरफ जाती है। or you could even view this as kind of aggregate demand as a function of aggregate income. This is the actual point where the actual economy is at equilibrium, where expenditures are actually equal to output. And actually, it's a little bit skewed the way I drew it, but these actually should be like a square. Actually, let me see if I can draw it a little bit clearer than that, just so it actually looks like a 45-degree line. So maybe it should really be a 45-degree line like that. And so that seems a little bit better. So that's the point at which we are at equilibrium. And actually, I don't like that because it makes it a little bit harder to analyze. But hopefully you get the idea. This should be a line that's where expenditures is equal to aggregate income. So I'll do it like this, just so it intersects at a point that's a little bit easier for me to analyze. Now, this is where the Keynesian cross becomes a kind of interesting tool, because we can start to think about what happens in situations. So this is an equilibrium level of GDP. What happens if, for whatever reason, that aggregate output, aggregate income, is higher than that equilibrium level? So let's think about that scenario. So let's say we're over here. Let me do that in magenta. Let's say we're over here. Let's call that Y1. So what is going on? What is going on right over here? ये और ये इन दोनों को मिला के कीन्सियन क्रॉस कहते हैं। ये वो पॉइंट है, देखो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करते हैं, ठीक है? मार्केट क्लियरिंग यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस लाइन पे। और ये जो है ये प्लान्ड आपकी एक्सपेंडिचर्स हैं। बहुत ही अच्छा हो वो पॉइंट जहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर और इनकम भी सेम हो और वही चीज़ प्लान्ड भी हो। ये जो पॉइंट है ना, व्हाट डज़ रिप्रेजेंट कि जो आपका सर्कुलर फ्लो से एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल था, वो भी वही है और जो प्लान्ड थे, जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स थे, प्लान्ड थे, जो कि लोगों ने अपने अंदाज़े के हिसाब से एक्सपेंडिचर्स कर रहे थे, वो भी एक जितने हैं। सो दिस पॉइंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये दोनों अगर तो दोनों चीज़ें इक्वल हों कि जो प्लानिंग थी वो परफेक्ट प्लानिंग हो, हुँ?
जितना आउटपुट प्लान के बारे में एस्टिमेट किया था लोगों ने, उतना ही एक्चुअल आउटपुट लेवल हो, तो नो प्रॉब्लम, वो ये पॉइंट है। लेकिन वो आपको आगे बता रहा है कि ऐसा नहीं होता और सिचुएशन भी हो सकती है। Here at Y1. Over here, the aggregate output, which is the same thing as aggregate income, is right over here, while this is the actual planned expenditures, is right over here. So all of this excess above kind of the planned demand, these are essentially going to be inventories building up. The economy is producing more than it actually needs. Inventories are going to build up. Firms are not selling all of their products. And that excess built up inventory is going to be reflected in investment. So in this case, this delta is going to be added to your planned investment to get what the actual investment might be. And when an economy is at that state, then firms might say, oh my God, we're building inventory more than we expected. We're not selling our products. We're going to lower output. So there's kind of a natural feedback mechanism for the GDP to go back to equilibrium. And let's think about what happens if it's below that equilibrium point. Let's say that GDP is, let's call that right over here. So this is Y2. I could write it as a subscript. I don't know, I wrote it as a superscript. ये वाला जो पॉइंट है, ये जब आपकी इकोनॉमिक रिसेशन होती है या डिप्रेशन होती है, जब कीन्स ने अपनी थ्योरी प्रेज़ेंट की थी ना, तो उस वक़्त वो ये कहता था कि नेचुरल लेवल से जो होनी चाहिए, वो कम है, वो आपकी आउटपुट ही कम है। तो इसलिए देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, और ये उसकी पीछे सारी की सारी जो है वो लॉजिक, इकोनॉमिक लॉजिक दे रहा है कि व्हाई शुड द गवर्नमेंट इंटरवीन? There, but we could call this Y2. So over here, aggregate demand at this level of output is more than what's actually being output. People want more goods and services. So right over here, this is kind of a deficit of output. And so this shows that people will be digging into inventory, that the existing inventories or the existing investment was not enough. Or I guess another way to think, they'll essentially, inventories will be contracting. If let's say business was constant, I had a lemonade stand, I just keep an inventory of 5 cups of lemonade on hand and I sell a cup every hour. If all of a sudden people start buying 2 cups an hour, my inventory is going to start getting depleted. And so this is what's reflected. Actual output is below what's demanded. And when firms start seeing that their inventories get depleted, they say, oh my God, I don't want to run out of my goods and services. Let me start producing more. And when we're talking about inventories, we're really talking about goods. So let me produce more. And so output will once again want to naturally go to that feedback point. So hopefully that makes a little bit of sense. In the next few videos, we'll be using the Keynesian cross to think about how the Keynesian line of reasoning, so how if you change one of these, how that might affect the new equilibrium level of GDP. What I want to introduce you to in this video is the idea of a Keynesian. अच्छा जी, ठीक है। अम, ये केन्जियन क्रॉस उन्होंने आपको बताया है, जो बैकग्राउंड है आईएसएलएम कर्व की, कि जो आपका जहाँ वो वाला पॉइंट जहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम सेम है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। उससे शॉर्ट रन में जो है वो आपकी एक्सपेंडिचर्स डिविएट कर सकते हैं। और जब आपके एक्सपेंडिचर्स उससे डिविएट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि फिर यू विल हैव द अपॉर्च्युनिटी कि आप इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट या जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, उनमें चेंज करके और उसे आप एग्रीगेट डिमांड को बूस्ट करें और उस बूस्ट की वजह से आपकी इंक्रीज़ हो आउटपुट। अच्छा चलिए, अब इसको केन्जियन क्रॉस को ये लिंक कर रहा है विद द In the last video, we hopefully got the intuition between how real interest rates might impact planned investment. We saw that if real interest rates went up, then planned investment went down. If real interest rates went down, then planned investment went up. What we want to do in this video is take this conclusion right over here, this hopefully fairly intuitive conclusion right over interest rate
इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ है? इंटरेस्ट रेट यानी अ, अगर कोई बंदा बैंक के अंदर पैसे रखे या कहीं इन्वेस्ट करे तो उसको उसका रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है? वो इंटरेस्ट रेट है कि क्या आप पैसा जो है वो फौरी खर्च करना चाह रहे हैं या अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं, लिक्विडिटी अपने पास रखना चाह रहे हैं या उसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है? इंटरेस्ट रेट अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट जो ये इंटरेस्ट रेट है कि कितने रिटर्न्स मिलते हैं। हर मुल्क का एक इंटरेस्ट रेट होता है, पाकिस्तान का देख लीजिएगा। पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट एक चंद सालों के लिए बहुत ज़्यादा 1 साल के लिए तकरीबन काफ़ी जो है वो रखा गया था, हाई रखा गया था लेकिन अब उसको कम कर दिया गया है, अब मेरा ख़्याल में 8% के करीब है। तो आप देखें कि वो हर मुल्क का एक इंटरेस्ट रेट होता है और उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोग जो है वो अ, अगर अपना पैसा सेंट्रल बैंक के साथ या किसी में रखवाना चाहें और कमर्शियल बैंक्स के साथ रखवाना चाहें तो वो एक इंटरेस्ट रेट कोट करते हैं। over here and apply it to our Keynesian cross and think about how real interest rates would affect overall planned expenditure and then what that would do in a model like the Keynesian cross, what that would do to our equilibrium real GDP. So just as a reminder, so let's just draw our Keynesian cross first, or parts of it. So on this axis right over here, we have expenditures. This axis right over here, we have income. And we know from many videos now that an economy is in equilibrium when income is equal, when aggregate income, aggregate real income is equal to aggregate real expenditures. So circular flow of GDP. So let me make a line that's all the points where y is equal to expenditures. So along this 45-degree line right over here, so if this is our expenditures, at this point right over here, that should be the same value as what our aggregate income is. Now that's part of the Keynesian cross. The other part is to actually plot planned expenditures relative to this and then see where they intersect. What is the equilibrium point on that planned expenditure line? And I'll write it here as, I've written it in the past as planned, I just wrote out the word, planned expenditures. We could write it even as, as expenditures planned, like that. And it's equal to our aggregate consumption. And our aggregate consumption, we can write it as a function of disposable income. Y minus T is disposable income, aggregate income minus aggregate taxes. And I want to be very clear here. This is not saying C times Y minus T. This is saying C is a function of Y minus T. Give me a Y minus T, and I will give you a C. And for the sake of our Keynesian cross analysis, and this is kind of what you would see in a traditional intro class, we assume that we have a linear consumption function. So we assume that our consumption function, so C as a function of disposable income, it might be something like our autonomous consumption plus our marginal propensity to consume times our aggregate income minus taxes. So this right over here really is multiplication. We could really distribute this C1. This is just saying C as a function of Y minus T. So that's only one part of planned expenditures. Above and beyond that, we have investment, planned investment. We're talking about the planned side of things. And now we know that planned investment, in the past we viewed it as a constant, but now we know it can actually be a function of real interest rates. And then above and beyond that, we have government expenditures and then net exports. So for some given real interest rate, we can plot this line. The consumption function right over here is just a line. अच्छा, अब तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पे जो इसने लिखा हुआ है दोबारा देखना ये आईएस कर्व के अंदर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हम पढ़ रहे हैं कि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। यहाँ पे उसको हम इससे पिछले वाले वीडियो में क्यों उसको हमने जो है वो कांस्टेंट लिया हुआ था? इसलिए क्योंकि वहाँ पे हम कंसिडर कर रहे थे एक्सपेंडिचर्स वर्सेस द इनकम, ठीक है? आर को तो हम छेड़ ही नहीं ना रहे थे, तो इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में वो कांस्टेंट था। अब हम आगे से जब आर को चेंज करेंगे, तो तब हम देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है और वही है आईएस कर्व कि अभी आपको यही लॉजिक बताएगा।
with a positive slope that intersects the vertical axis at some place up here. It has a positive intercept. And so all of these, for a given interest rate, these are all going to be constant. And so our planned expenditures would look something like this. So it might look something like that. So this ये केन्जियन क्रॉस है, ये जो बना रहा है ना, ये केन्जियन क्रॉस है, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स है और ये जो है ना, ये सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये सारे वो पॉइंट्स हैं वेयर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम एज पर द circular flow of income concept that expenditure is equal to the income. ठीक है, ये वो वाले सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं और ये जो है ना, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर का एक लाइन है और ये जो क्रॉस है इसको कीन्जियन क्रॉस कहते हैं. is YP. Let's call this YP underscore 1. And this is the YP we get when we pick, and I'll just rewrite the whole thing over again. So we have our consumption, which is a function of Y minus T, plus the level of planned investment at, let's say, interest rate R1, so at some given interest rate, plus government spending, plus net exports. And we see, we've done this Keynesian cross analysis several times now already. This is our equilibrium level of GDP. This is where, along our planned expenditure line, where income is equal to expenditures, or where output is equal to expenditures. We have a balanced, we are at equilibrium right over here. We aren't having unplanned, we're not eating into inventories in an unplanned way, and we're not building excessive inventories above and beyond what we had planned. Now what I want to think about, what happens if interest rates go from R1 to R2? So what happens if interest rates go from R1 to R2? And in particular, let's assume that R2, so now we're going to have planned investment at R2, and we're going to assume that R2 is less than R1. So we're essentially saying, what happens when interest rates go down? Well, we already know when interest rates go down, planned investment goes up. So everything else equal, if this thing shifts up, if this term right over here goes from R, if the input into it, if the real interest rates goes down, then this whole expression is going to go up. And so you're going to have an increase. You're going to have a shifting up of your planned expenditures for any level of income. And so it might look something like this. It would look something like this. So this delta right over here, let me do it right over here. So this distance right over here is going to be your change in planned investment. And it went up because interest rates went down. We saw that in the last video. And we saw that we got to a new level, or we see now that when you shift that up, that investment goes up. Because real interest rate went down, you get to a new equilibrium point. And that equilibrium point is a higher level. It's a higher level of GDP or income. And we know from previous videos as well that this distance right over here is the same as our multiplier. तो ये जो लॉजिक ये आपको बता रहा है, खैर मल्टीप्लायर लॉजिक तो उसके बाद आप छोड़ सकते हो, जो समझने वाली बात है, आईएस कर्व को समझने वाली बात है, वो ये कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो रहा है, R2 is less than R1. जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगी. प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए वो ये पहले येलो लाइन थी, फिर इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो वो इस तरह शिफ्ट जो है वो आपको प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स की नजर आएगी. क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है वो एक कांस्टेंट है, तो वो जब ऐड हो जाएगा बढ़ रही है. क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गया. तो ये नया जो है ना, ये पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ये मैंने बताया था, ये इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं ना बच्चों, वो सारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं. पहले वो ये था, लेकिन इंटरेस्ट रेट को घटाने की वजह से, क्योंकि प्लान्ड आपकी एक्सपेंडिचर्स वो बढ़ गए हैं, क्योंकि जो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट है वो बढ़ गया है, देयरफॉर यू सी एन इंक्रीज इन दी इनकम. ठीक है, इसके बाद ये एक मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, सुन लें. वैसे एनीवे मैं आपको उसको आसान तरीके से बता दूं. Times the amount that things got bumped up. So the amount that things got bumped up was the change.
as we go on our way to constructing our ISLM model is really that all we're seeing, look, interest rates, when real interest rates go up, planned investment goes down. When interest rates go down, which is what we saw in this example right over here. So actually, let me write this down. So so planned expenditures 2, it's C as a function of y minus t plus our new planned investment at this lower interest rate plus G plus net exports. This is our y2 right over here, our planned expenditures. So we saw in this example, when real interest rates went down, planned expenditures, when real interest rates went down, planned investment went up, and that made total planned expenditures go up, and that made total GDP go up. So now we can have another relationship, which is really very analogous to this, because really by changing this, we're just shifting this curve, and then you have the multiplier effect on our equilibrium output. So the big takeaway from here is if real interest rates go up, not only does planned investment go down, that would shift this entire curve down, and then that would also cause our equilibrium real GDP to go down. And it would go down by some multiplier, by the multiplier of how much this goes down. If real interest rates go down, then planned investment, because of what we saw in the last video, goes up. And then that would cause this whole, that's what we did in this video, this curve would shift up. And if this curve shifts up, our equilibrium GDP is going to be however much this shifted times the multiplier. And so your equilibrium GDP is going to go up. So you really have a very similar relationship in terms of just how things move. And we can plot this. And economists are famous for not always plotting the independent variable the way you would want to. So as we construct what we're going to see is our IS curve, and it stands for investment savings. What we're going to do, and we'll talk more about that in the future, the convention is to put real interest rates on the vertical axis and to put real GDP right over here. And so if you want to look at this relationship, when we have a high real interest rate, we're going to have a low real GDP. And when we have a low real interest rate, we're going to have a high GDP because it's going to make spending go up. Spending goes up. You have a multiplier effect, makes our equilibrium output go up. So low interest rate, high real GDP. And so you have a curve that relates if you want to. समझ आए? ये जो है ना, जब इंटरेस्ट रेट को आप वाई एक्सिस के ऊपर रखते हो और टोटल जो आउटपुट है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हो, तो ये जो कर्व बनेगा इसको आईएस कर्व कहेंगे। उसके पीछे ये सारी लॉजिक है, ठीक है? इसको हम आईएस कर्व कहेंगे, इसके पीछे लॉजिक है क्योंकि ये जो जो उसने आपको पूरा समझाया है, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं तो इनकम कम होती है और जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इनकम ज़्यादा होती है। इनकम यानी कि जीडीपी की बात हो रही है। ये जो वाई है ये जीडीपी है, ठीक है? तो ज़्यादा होती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके जब वाई एक्सिस के ऊपर आप इन जीडीपी इनकम रखेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट रखेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे जीडीपी को, तो आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। इससे आईएस जो है ना, वो ग्राफ कहते हैं। Relate real GDP to real interest rates, you get a curve like this, and it's called the IS curve. And IS comes for investment savings. But we're really more focused on the I part of it, the way we analyzed here. Because the whole reason, based on the logic in this video, and the last one as well, the whole reason why we have this relationship is due to real interest rates' impact on investment. When you have high real interest rates, you don't have much investment, and that also, you'll be sapping out of GDP. If you lower interest rates, then that makes you end up having a lot more investment, like we saw in the last video, and that will expand GDP by the multiplier that we see right over there. In the last video, we hopefully got the intuition between ओके। जी, अब कोई अगर बच्चा कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। सुहान अली।
आप अनम्यूट करके पूछें तो आप पूछें।